As we can see in this diagram, see this one is the mossy fiber and this green one is the climbing fiber. They are input to the cerebellum. Like say this is the cerebellar cortex. This dashed line separates the cerebellar cortex from the cerebellar medulla. Okay, cerebellar medulla. Within the medulla there is deep cerebellar nuclei. Okay, so mossy fiber also communicate with the deep cerebellar nuclei. Okay, let me add a disclaimer over here. Listen it attentively. You will find me saying that mossy fiber being the father and the climbing fiber being like the climbing and mossy fiber in this video. I have tried to explain it by explaining it in the form of a big happy family, climbing fiber being the mother and mossy fiber being the father. So they are actually the input to the cerebellum. And most of the textbook they mention that mossy fiber communicate only with the granule cell and the Golgi cell, and climbing fiber communicate with the Purkinje cell. They haven't mentioned anything regarding the communication of the mossy fiber with the basket cell or the climbing fiber with the basket cell, but still a bit of connection is always there with the basket cell. So you will find me saying all these things like the mossy fiber also communicate with the basket. So ignore that part. Don't get confused. Just remember this thing that mossy fiber communicate with the granule and Golgi cell, and climbing fiber communicate directly with the Purkinje cell. And mainly the granule cell is the one which send the parallel fiber, and indirectly then it communicate with the basket cell, and basket cell will ultimately end up on the Purkinje cell. Okay. So let me explain this connection between different type of the cells within the cerebellum by giving an example of a joint family, a large joint family. It's a like very desi version. इससे आपको क्या होगा? It will be easier for you to understand the thing. Say, who is the main चीफ और जो आपका मुखिया है फैमिली का वो था पर्किंजे सेल. सो मुखिया का मतलब ये नहीं है कि वो पेरेंट्स है. आजकल की सिचुएशन आप देखिए कि सेरिबेलम इट्स ए ह्यूज फैमिली. पेरेंट्स आर क्लाइमिंग फाइबर एंड mossy fiber. Okay, climbing fiber is mother and mossy fiber is father. Okay, and they have got 5 kids. Purkinje is the eldest son. Okay, जो अभी टीनेज में पहुंच चुका है और वो गंदी आदतें पड़ गई है उसको. स्मोकिंग ड्रिंकिंग वी विल कंसिडर इट ओवर हियर. एंड बिकॉज सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी जज करेगी फैमिली को सबसे बड़े बेटे के बिहेवियर पे. अरे उनका शर्मा जी का बेटा तो बिगड़ा हुआ है, शर्मा जी की फैमिली तो ऐसी है. सो दिस शर्मा जी की फैमिली पर्किंजे सेल से डिसाइड हो रही है. पर्किंजे सेल हैज़ रिसेंटली हिट इज प्यूबर्टी और वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहा है. सो दैट इज द नेगेटिव आउटपुट इज गोइंग राइट. अब बाकी के जो बच्चे हैं सीक्वेंस वाइज हम कंसिडर करते हैं. सेकंड इज basket cell, third one is stellate, and then fourth one is Golgi, and fifth one is granule. Granule सबसे छोटे वाला सबसे छोटा है. अब पापा के सबसे लाडले कौन से होते हैं? ग्रेन्यूल, छोटे वाले ग्रेन्यूल एंड गोल्जी. ओके, जस्ट कंसिडर दे आर द डॉटर्स. पापा की परी है ये, ठीक है, पापा की परी गोल्जी एंड ग्रेन्यूल. अब माँ का लाडला कौन है? पर्किंजे. जो हमारा जो कंसर्न है कनेक्शन का, दैट इज कंसर्न विद द गोल्जी ग्रेन्यूल. ग्रेन्यूल सबसे छोटे वाला और सबसे बड़े वाला, और बीच में यहाँ पे हमारा बास्केट हो रहेगा बीच में, ठीक है. सो इफ इट इज मदर और द फादर, दे ऑलवेज अप्रिशिएट देयर किड, राइट. अब क्या करें, बच्चे हैं उनके अप्रिशिएट करना पड़ेगा. सो दिस इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, इनको भी एक्साइट कर रहे हैं. बट अब पर्किंजे क्या हो गया? पर्किंजे भाई साहब इनहिबिट कर रहे हैं, बाहर सोसाइटी में नाम कर रहा है. माँ क्या करती है? माँ का लाडला तो हमेशा वो सही होता है. माँ बोलती है नहीं नहीं मेरे बेटे में कोई खोट नहीं है, या तो सोसाइटी खराब है या आप खराब है, ये है. वो कभी इनहिबिट नहीं करेगी उसको, वो जस्ट अपना उसका फोकस है पर्किंजे पे. नाउ फादर विल ट्राई टू
चेंज द बिहेवियर ऑफ द Purkinje इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं बोलेगा, डायरेक्टली ज़्यादा बात ही नहीं होती कम्युनिकेशन। तो अब ये क्या करेगा, ये ग्रेन्यूल को और इनको बोलेगा। अब ग्रेन्यूल और गोल्जी है, इनका इस लेवल का है, इनके आपस में भी गड़बड़ चल रही है। जो सेकंड नंबर का होता है गोल्जी, ये इसको इनहिबिट करता रहता है, इसके थप्पड़ मार देगा बीच में। जबकि छोटे वाला ग्रेन्यूल है, ये क्या है आपका, स्टिमुलेटरी था ना। ग्रेन्यूल इज द ओनली एक्साइटेटरी सेल। सो ग्रेन्यूल छोटे वाला है, अब चाहे इसकी मजबूरी हो, सबसे छोटा है, इसकी पिटाई कर दी जाएगी, ये सबको स्टिमुलेट करता रहता है। कहता है अरे दीदी, अरे भाई, आप तो मस्त हो, ठीक है, ये इनको स्टिमुलेट करता रहता है, राइट। बट गोल्जी है, इसका बस इन पे चलेगा नहीं ज़्यादा, मेन इस पे चलता है, तो ये इसको इनहिबिट करता रहता है। अब नाउ आई विल ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, दैट विल make this connection part easier for you. Climbing fiber, excitatory, we will draw it with green color. Okay, this is Purkinje cell. What was the output of the Purkinje cell? Inhibitory, I will try to draw with purple one. It was going to deep cerebellar nuclei, right? Deep cerebellar nuclei, inhibitory, right? And mother is climbing fiber. This climbing fiber, it is stimulating the Purkinje cell. It also gives the branches to the other kids. हर उनको भी तो संभालना है, बट मेजर चंक जो है वो Purkinje cell 1-to-1 टॉक करती है। और जो मदर फादर है, ये सोसाइटी वालों क्या करेंगे, इनको नहीं नहीं जी, हमारा बेटा सही है, ये डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई को भी एक्साइट करते रहते हैं। नाउ दिस इज मॉसी फाइबर, ये भी सोसाइटी वाले कहेंगे नहीं नहीं जी, ऐसे ही लग रहा है आपको, हमारा बेटा तो सही है। एंड हु इज द पापा की परी, ग्रेन्यूल एंड गोल्जी। नाउ इट विल स्टिमुलेट ग्रेन्यूल, इट विल स्टिमुलेट गोल्जी सेल, राइट। नाउ व्हाट वाज गोल्जी डूइंग, गोल्जी सेकंड नंबर का है, इसका ज़्यादा बस चल नहीं रहा है, ये आपका ग्रेन्यूल को इनहिबिट कर देता है। ऐसा नहीं है कि बाकी आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, करते हैं कम्युनिकेट, बट इतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए जो मेन कम्युनिकेशन है, मेन हमारा कनेक्शन का पार्ट है, दैट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ ओवर हियर। नाउ मिडिल चाइल्ड है, उनका ज़्यादा कोई ख्याल नहीं रखता है, पता है ना, स्टिलेट एंड बास्केट सेल। बास्केट सेल सेकेंड नंबर का है, तो सेकेंड नंबर वाला फर्स्ट नंबर वाले से क्या करता है, हमेशा चिढ़ता ही है ना, तो ये इसको इनहिबिट करता है। This is the disclaimer I was talking about. You might find me saying the Mossi fiber communicates with the basket cell too, but most of the textbook they don't mention, so don't get confused. Okay, don't get confused. Ignore that part. Just remember the Mossi fiber communicate with granule and Golgi cell. These youngest child, okay, the younger one, and climbing fiber, the mother, communicate with the Purkinje cell. And basket cell is getting, yes, all the other cells they do get communication from granule cell via the parallel fiber. Okay, dissect it further, we can subdivide this entire connection into three parts. One is feed forward inhibition of Purkinje cell. Second one is feed forward inhibition of granule cell. Third one is feedback inhibition of granule cell. So one by one, this feed forward inhibition of Purkinje cell we will cover. What does feed forward inhibition means? Feed forward inhibition, this one just focus on, say, between the granule cell and Purkinje cell. We will talk about the granule cell and Purkinje cell, how they communicate with each other, how they are communicating. This granule cell, ये सबसे छोटा बच्चा था ना, it is stimulatory. Okay, granule cell is the stimulatory. So it not only stimulates the Purkinje cell, it also stimulates the basket cell. So when the granule cell stimulates the Purkinje cell, the response, the Purkinje cell output should enhance, right? But that stimulation of the Purkinje cell by granule cell is very short-lived. Why? Because the same granule cell also stimulates the basket cell, which in turn inhibits the Purkinje cell.
कि ये कंट्रोल में है, ये इसको कह रहा है ठीक है शाबाश बहुत अच्छे है, तो इधर से ये बास्केट कहता है ज़्यादा कूदना, एक तरह से ग्रेन्यूल इनडायरेक्टली इसको कह रहा है ज़्यादा कूदना, कंट्रोल में है. सो दिस इज called as feed forward inhibition. Why it is called as feed forward inhibition? Because this basket cell and Purkinje cell, they have got one common this pathway. Granule cell is on one hand it is stimulating the Purkinje cell, but on the other hand indirectly it is stimulating basket cell and inhibiting the Purkinje cell. So this is feed forward. इसको feed कर रहा है basket cell को. It is feeding the basket to inhibit it. This is feed forward inhibition of Purkinje cell. Now, the rest of the two, they are concerned with the granule cell. Now, we will talk about the granule cell. So, in the picture is granule cell. Who is stimulating granule cell? Mossy fibers, right? And what else mossy fiber is doing? It is also stimulating Golgi cell. And what is Golgi cell doing? It is inhibiting granule cell. So this is also the feed forward inhibition of the granule cell. The same common pathway which stimulates the granule cell also stimulates the Golgi cell, and in turn Golgi inhibits the granule cell. Means we can say mossy fiber is stimulating granule cell, but in indirect way it is also inhibiting the granule cell via the Golgi cell. That's why this is called as feed forward. It is feeding Golgi to inhibit granule. So feed forward inhibition, and it's going a forward pathway, it's not the back. That's why it is feed forward inhibition. Now what is feedback inhibition? Now feedback inhibition of Golgi cell is the communication between Golgi and granule cell only. What is granule cell doing? Granule cell is stimulatory. So what will it do to the Golgi? It will stimulate. ये second number का child था, remember? So what is Golgi doing? Golgi is inhibiting it back, inhibiting granule cell. Okay. Pardon me for this देसी version जो example आपको दिया है, but ये आपको help करेगा remember करने में. So this is the feedback inhibition of the granule cell.